Hello friends, let's know DOL starter connection dot diagram. 3-phase motor, overload relay, 3-pole contactor, 3-phase power. This is the start push button. This is the stop push button. This is the NC contact of overload relay. This is the off indicator lamp. This is the on indicator lamp. This is the trip indicator lamp. This is the NO contact of overload relay. This is the NO contact of contactor. This is the UNC contact of contactor. Now the off indicator lamp is on because motor is now off. Let's push the start push button. See it now, on indicator lamp is glowing because motor is running now. If I push this off switch, see now motor is off and off indicators is glowing. See motor is now off. See now on indicator lamp is off now. If I press this start push button, then motor will start again. And on indicator is glowing now. But this trip indicator is off now because motor is ruining dot. If this overload relay will trip, then it will glow this lamp. If we reset the overload relay, then trip indicator lamp will off, and off indicator will glow until we start the motor. Push it start push button. See the motor is running and the on indicator is glowing. Friends, if you like this video, then hit the like button and subscribe to my channel Munna Electrical for the regular update about related electricals video. Let's push it this push off button. Now see motor is off now. Now in Hindi only. फ्रेंड्स एक कॉन्टेक्टर है 3 पोल का, ये हमारा 3 फेस पावर है, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है और ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, ये हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है, ये ऑफ इंडिकेटर लैंप है और ये इसका हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्टर का, ये हमारा एनो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्टर का। और देखिए अभी हमारा ये जो देख रहे हैं ना, ये ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट है, इसका ट्रिपिंग। स्टार्ट पुश बटन दबाया, मोटर चालू हो गया, ऑन इंडिकेटर जलने लगा। फिर हम इसको अभी देखिए ऑफ किए तो हमारा ऑफ इंडिकेटर जलने लगा, मोटर ऑफ हो गया। फिर हम अब इसको देखिए ऑन किए तो हमारा मोटर ऑन हो गया और ऑन इंडिकेटर जलने लगा। अब हम इसको ट्रिप करेंगे, देखिए ट्रिप हुआ, ट्रिप इंडिकेटर जल रहा है और मोटर का जो ऑफ इंडिकेटर है वो भी जल रहा है। फिर इसको हम लोग रीसेट किए, इसको फ्रेंड रीसेट करेंगे तो ट्रिप इंडिकेटर चला जाएगा। देखिए रीसेट किए, ट्रिप इंडिकेटर चला गया, अभी ऑन किए, मोटर हमारा ऑन हो गया और हमारा ऑन इंडिकेटर भी अभी चल रहा है। तो ये था हमारा